Students, this is chapter number 9. We are going to start today the sentence. So, what is a sentence? Now, how sentence is formed? What are the types of sentence? So, all these are the questions which are going to be answered in this chapter, right? So, we are having two examples here in the starting. I love my mother, right? This is the first one. I love my mother. What is this? This is a simple sentence, right? This is a statement. मैंने कुछ कह दिया, बस मैंने कहा, मैंने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया एक तरीके से. आई लव माई मदर. Similarly, we are having another sentence. Where have you been? Right? Where have you been? What is this? This is a type of question. I'm asking someone. So all these two, both these two are what? Are some group of words, right? Are just group of words. First one is also a group of four words. Similarly, the second one is a group of four words. The number of words are equal in both cases. Then what is the difference? There is a difference in its type, right? In its function, its purpose. Similarly, we are having different other sentences also. This is a type of sentence, right? These are sentences, right? So I love my mother is a different type of sentence, and where have you been is a different kind of sentence, right? So some set of words some set of words which are arranged in a specific order to make the complete sense or the complete meaning are called sentences, right? Those set of words which are arranged in a proper or specific or a particular order to so that they just deliver a complete meaning, then the group of or set of words is known as a sentence. I think it's clear now. We are having 2 points here to remember to keep in mind. One is a sentence always starts with a capital letter, right? We all know this. We just used to practice it in our day to day work. If when we do work in our notebooks, we just keep it in mind. We just start every sentence with a capital letter, right? We just used to start the sentence with a word which is having capital alphabet initially. First alphabet is always capital, you know this. And just use a full stop, an exclamation mark, or a question mark when a complete sentence is written, right? When we write complete sentence, then after completion of sentence we just use a full stop or an exclamation mark or a question mark depending upon the type of sentence, right? Now we are having exercise here. Uh, Rearrange the following words to make correct sentences at the correct punctuation where needed. Now what we have to do, we have to just rearrange these words in order to make a complete uh, correct sense. If we read it like this, right, as it is, then the meaning is not correct, right? Suppose if we read it like, is planet warmer the getting? Does it make any sense? No meaning is delivered, right? It is of no worth, right? It is meaningless, useless group of words. Now if we just rearrange these shuffled words in a proper particular specific order, then we'll get a proper complete sense, complete meaning. That is a sentence, and just we have to use a punctuation mark, whether it could be a full stop, it could be a exclamation mark, it could be a question mark, right? So is planet warmer the getting? So we can rearrange it like, the planet is getting warmer. The planet is getting warmer. So this is the complete meaningful sentence. The planet is getting warmer. So here the first word to be used is the, right? Second is planet. Third was is. Fourth is getting, and fifth is warmer, right? The planet
आई थिंक आप लिख लेंगे, यू आर एबल टू राइट इट, राइट? यू आर एबल टू राइट this in the order which I denoted you here. First is the, and the is to be the is to be written like capital T H E, right? कैपिटल टी से स्टार्ट होगा, ठीक। द स्टार्टिंग में द आएगा, नंबर वन है, तो द कैपिटल टी से स्टार्ट होगा, और लास्ट में वार्मर के बाद में आपको फुल स्टॉप लगाना है, राइट? सो सिमिलरली वी हैव टू डू ऑल दीज क्वेश्चंस। जो सबसे बड़ा नज़र आ रहा है उसको और करके दिखा देता हूँ। जो सबसे बड़ा नज़र आ रहा है वो फिफ्थ वाला है, राइट? सो फिफ्थ वन इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स। Republic, celebrate Republic we great day with pomp, show and the, right? So it is the Republic Day we celebrate with great pomp and show, right? Pomp and show. The Republic Day we celebrate the Republic Day with great pomp and show. So we celebrate से start होगा. Now we is the first and celebrate is the second. उसके बाद the, उसके बाद रिपब्लिक, उसके बाद डे, उसके बाद विद, उसके बाद ग्रेट, उसके बाद पॉम्प, उसके बाद एंड, उसके बाद शो, राइट? वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, राइट? सो दिस इज़ द करेक्ट सेंटेंस। सो वी जो है कैपिटल डब्ल्यू से स्टार्ट होगा, वी कैपिटल डब्ल्यू से, कैपिटल लेटर से, और आखिर में फुल स्टॉप। When we forming a sentence, we name a person or thing and then say something about that or person or thing, right? The person or thing named is called the subject of the sentence, and what we say about the person or thing is called the predicate. तो जब भी हम किसी पर्सन या थिंग से स्टार्ट करते हैं किसी चीज़ को बोलना, किसी बात को कहना, तो पर्सन या थिंग या प्लेस का नाम जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, और उसके बारे में हम जो कुछ कहते हैं वो प्रेडिकेट। तो एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, वन इज सब्जेक्ट पार्ट एंड अनदर इज प्रेडिकेट पार्ट। सो यहाँ पे सेंटेंसेस है, प्रिया डांसेस, रफ़ी सिंग्स ब्यूटीफुली, द थ्री मैन सेल्ड इन अ बोट। तो ये तीनों सेंटेंसेस देखिए, जो रेड कलर से है, मैरून कलर से, वो क्या है, सब्जेक्ट पार्ट है, बाकी का जो है वो क्या है, प्रेडिकेट पार्ट है, ठीक है। In a sentence, the subject usually comes first and then followed by the predicate. Sometimes, however, it may be placed after the predicate. This is often used in literally poetic expressions, right? तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी प्रेडिकेट पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। तो ये लिटरेरी या पोइटिक एक्सप्रेशन यानी कि जो पोएम्स वगैरह होती हैं उसमें आपको कहीं कहीं पे देखने को मिलता है। जैसे अराउंड द गार्डन रैन द नॉटी चिल्ड्रन, द नॉटी चिल्ड्रन रैन अराउंड द गार्डन। बेसिकली ये जनरल सिंपल सेंटेंस है, बट अराउंड द गार्डन रैन द नॉटी चिल्ड्रन ऐसे बोला तो ये पोइटिक थीम, पोइटिक टोन हो गई थोड़ी सी। तो पोइटिक या लिटरेरी एक्सप्रेशंस में हम करते हैं एक्सप्रेस। साइलेंटली फ्लोट द रिवर फ्लोट साइलेंटली, दिस शुड बी लाइक दिस, बट इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, राइट, इन सम सेंस। In sentences which express an order or request, the subject is always you, but it is understood and not stated, right? जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं या कोई कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हमेशा हम यू यूज़ नहीं करते हैं। कभी कभी यू जो है वो स्टेट नहीं किया जाता और वो अंडरस्टूड होता है, राइट? जैसे ओपन द डोर, यू ओपन द डोर, राइट? हम किस जिससे कह रहे हैं उसको के लिए कह रहे हैं, तो यू इज़ नॉट नेसेसरी इन दिस केस, यू इज़ नॉट टू बी स्टेटेड हेयर। नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स, यू शुड नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स। जिससे हम बोल रहे हैं नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स, बेसिकली हम उसके लिए बोल रहे हैं, तो यू की नेसेसिटी ख़त्म हो गई। वी जस्ट say like this, never talk to strangers. Now here we have to identify the subject and predicate part in the sentences given here in this exercise number 2. Tarun is quite late, right? Tarun is the subject and is quite late is the predicate part, right? So similarly we have to just identify and separately highlight the subject and predicate part in all these 10 sentences. Here the table is given, we have just have to write
the subject in the subject column, and the predicate in the predicate column from all these 10 sentences, right? It's clear. So ये तो एक्सरसाइज आपको करनी है. नाउ विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन नेक्स्ट क्लास, राइट? तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास, एंड वी विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर ऑफ इन नेक्स्ट क्लास, राइट? थैंक यू वेरी मच. That's it for today. Do these two exercises, exercise number 1 and 2. Thank you.